बिफोर एक्सपेंशन द कंपनी इज हैविंग ए कैपिटल ऑफ 50 लाख रुपीस। अब कंपनी को एक्सपेंशन के लिए और 50 लाख रुपए चाहिए। एक्सपेंशन के बाद 1 करोड़ रुपए हो जाएंगे और वो 1 करोड़ रुपए के ऊपर कंपनी का जो ईबीआईटी आएगा 28 लाख। तो 28 लाख रुपीस जो ईबीआईटी दिया खाली नए कैपिटल का नहीं है बल्कि पूरी कंपनी का है। तो पहले से कैपिटल 50 लाख रुपीस है और कैपिटल 50 लाख। करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स। द कंपनी वांट्स टू इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्लान्स। इश्यूएंस ऑफ 100% इक्विटी। तो नया कैपिटल जो 50 लाख रुपए का चाहिए वो पूरे का पूरा इक्विटी से रेज करेंगे, ओनली इक्विटी, फर्स्ट प्लान। सेकंड, इश्यूएंस ऑफ 60% इक्विटी एंड 40% डिबेंचर। सेकंड प्लान, इक्विटी एंड डिबेंचर्स। Third plan, raising 40% through long-term loans, 40% through debentures and 20% through equity shares. You may assume a tax rate of 50%. So first plan we have only equity. Second plan we have equity and debentures. Third plan we have long-term loan, debentures and equity. Come on. Evaluating the proposed financial plans. A plan only equity, B plan equity plus debenture, C plan equity plus preference, equity plus debenture plus long term loan. We don't have preference. We don't have preference in the new capital. पुराने कैपिटल, पुरानी बैलेंस शीट में ऑलरेडी प्रेफरेंशियल कैपिटल इज गिवन, बट इन द न्यू प्लान्स वी डोंट हैव प्रेफरेंस। वी हैव इक्विटी, डिबेंचर एंड लॉन्ग टर्म लोन। पहले प्लान में ओनली इक्विटी है, दूसरे प्लान में इक्विटी एंड डिबेंचर्स, तीसरे प्लान में इक्विटी, डिबेंचर्स एंड लॉन्ग टर्म लोन। फाइनेंशियल प्लान्स। EBIT we are going to get 28 lakhs. Less interest on debt. Now here there is a different point. New point is there. There are two types of debts, old debt and new debt. Old debt का मतलब the debt which is there in the balance sheet. पहले से जो खर्चा बैलेंस शीट में है, डिबेंचर्स या लॉन्ग टर्म लोन, वो ओल्ड है। और न्यू प्लान्स में जो डिबेंचर्स और डेट है वो न्यू है। तो हम जब इंटरेस्ट ऑन डेट माइनस करेंगे तो दोनों को भी माइनस करना पड़ेगा, ओल्ड एज वेल एज न्यू। तो फर्स्ट वी टेक ए, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, ओल्ड। तो पहले से लॉन्ग टर्म डेट कितने का है? 12% ऑफ 10 लाख। It comes to 1,20,000. See, what is the new point? Interest on long term debt, old. Old का मतलब जो बैलेंस शीट में है। बैलेंस शीट में जो डेट है उसके ऊपर तो इंटरेस्ट पे करना मस्ट है, चाहे नए फंड्स ए से रेज करे, बी से रेज करे या सी से रेज करे। That's why we have taken 1,20,000 interest in all the columns. The interest on old debt must be paid irrespective that the new debt is raised by first plan or second plan or third plan. तो new. अब new long term debt only in the third plan. Long term debt we don't have in the A plan, we don't have in the B plan, dash. Only in the third plan we have. कितना long term debt है देखिए, raising 40% through long term loan. तो टोटल अमाउंट कितना है? 50 लाख। नया फंड मेरे को 50 लाख रुपए चाहिए। 50 लाख का 40% 20 लाख। 50 लाख रुपीस का 40% 20 लाख, तो 20 लाख रुपये नया। और उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%। तो 20 लाख का 12%
2,40,000. So first we have taken interest on long-term debt, old as well as new. The old interest should be taken in all the three columns, because from whichever source the new funds are raised, irrespective, we must pay interest on the old long-term loan. पुराना जो लॉन्ग टर्म लोन है उसके ऊपर तो इंटरेस्ट पे करना मस्ट है, इसीलिए सब में लेंगे. लेकिन नया जो है वो वही प्लान में लेंगे जहां पर एलटी लोन है. तो यहां पर थर्ड प्लान में एलटी लोन है, फर्स्ट सेकंड में नहीं है, पुट अ डैश. सेम लॉजिक वी अप्लाई फॉर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स. ओल्ड, तो पुराने डिबेंचर्स बैलेंस शीट में देखिए 10% ऑफ 5 लाख, it comes to 50,000. I am putting in bracket because we have to subtract. जो भी ब्रैकेट है उसको माइनस करने का है. उसी तरह न्यू. अब न्यू में देखिए डिबेंचर्स कौन से प्लान में है? सेकंड प्लान में भी डिबेंचर्स है, थर्ड प्लान में भी डिबेंचर्स. तो सेकंड प्लान में कितना डिबेंचर्स है? 40% डिबेंचर्स. तो 50 लाख रुपीस का 40% 20 लाख into the rate of interest on debenture is same 10%. तो 20 लाख का 10% 2 लाख, ये 2 लाख रुपीस यहां पर ले लिया. सिमिलरली लास्ट प्लान में भी डिबेंचर्स है, तो 40% थ्रू लॉन्ग टर्म लोन, 40% थ्रू डिबेंचर्स. इन द थर्ड प्लान ऑल्सो वी हैव 40% डिबेंचर्स. तो 50 लाख का 40% 20 लाख, और 20 लाख रुपीस के ऊपर 10% 2 लाख. That's all. तो इंटरेस्ट ऑन डेट, तो दो डेट से एक लॉन्ग टर्म डेट है और एक इंस्टेड ऑफ डेट वी राइट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स. लॉन्ग टर्म लोन्स है और डिबेंचर्स है, दोनों भी डेट है. तो इसके ऊपर पहले ओल्ड में दोनों पूरों को लेना, फिर न्यू जहां पर है वहीं पर लेना. उसी तरह डिबेंचर्स ओल्ड जो है सब में लेंगे और न्यू जहां पर डिबेंचर है वहां पर लेंगे. दैट्स इट. नाउ वी हैव टू सबट्रैक्ट. आफ्टर सबट्रैक्टिंग 25 लाख 50,000. Here after subtracting you will get 23 lakh 50,000. Last one we will get 21 lakh 10,000. 21 lakh 10,000. From PBT we subtract income tax at the rate of, what is the rate of tax given? 50%. PAT. The tax comes to 12,75,000. Second, it is 11,75,000. And last one you will get 10,55,000. This is a PAT. From PAT we subtract preference dividend. Now preference dividend is there only in the old. We don't have new preference capital. See here, in the A plan we have only equity, B plan equity debentures, C plan equity debentures, long term loan. Do we have any preference in the new plans? No. So only existing preference share capital is there. So existing, how much is given in the balance sheet? 15% of 10 lakh. Comes to 1,50,000. Subtract 1,50,000. You will get profit available. For equity shareholders. Now subtract 1,50,000. You will get 11,25,000. Next one you will get 10,25,000. Last one you will get 9,05,000. This is the profit available. Next, number of equity shares.
In number of equity shares, we take the old as well as new. Old. Existing number of equity shares. In the balance sheet, you can see 25 lakh rupees is the equity share capital. And the face value of each share is 10 rupees. So 25 lakh divided by 10 is 2,50,000. 2,50,000 is the number of shares existing. Now new plan. In the first plan 100% equity capital यानी पूरे 50 लाख रुपये equity share capital से raise करेंगे. तो number of shares you will get A plan. A plan rupees 50 lakhs divided by rupees 10 is equal to 5 lakh shares. In the first plan, we will have 5 lakh shares. So total will become 7,50,000 shares. Similarly, second plan, B plan, you can see 60% of equity. तो 50 लाख रुपये का 60%, 5 6 30 lakh. Divided by rupees 10 is equal to 3 lakh shares. 5,50,000. Last one is raising through 40% long-term loans, 40% debentures and 20% through equity capital. तो 50 लाख रुपये का 20% it comes to 10 lakh rupees. Again I repeat, see the last point, raising 40% through LT loan, 40% through debentures and 20% through equity capital. 50 लाख रुपए का 20% 10 लाख रुपये होता, तो 10 लाख रुपए को डिवाइड बाय 10 कर दिया तो 1 lakh shares, it comes to 3,50,000. 3,50,000, right? So equity shares we got. Now EPS is equal to profit available divided by number of equity shares. The profit available is how much? 11,25,000 divided by 7,50,000 rupees 1.5. Secondly, 1.86. Last one, 2.59. When you divide profit available divided by number of equity shares, 9,05,000 divided by 3,50,000, you'll get 2.59. उसी तरह 10,25,000 divided by 5,50,000, 1.86. 11,25,000 divided by 7,50,000, 1.5. That's it. Now conclusion. We suggest whichever plan has the highest EPS. EPS 1.5, 1.86, 2.59. So where it is highest? 2.59. Now we have to give the conclusion. It is suggested to adopt a financial plan C, since in this case the EPS is the highest, that is 2.59. Hence we suggest the company to raise the funds through equity, debenture and long-term loans. That's it. So the new point in this problem is the existing capital is given. The existing capital is given. So we have to deduct old as well as new. Old जब लेंगे तो तीनों कॉलम्स में लेंगे, all the three columns. New जब लेंगे तो concerned कॉलम में लेंगे, जो कॉलम में डिबेंचर है वही कॉलम में, जो कॉलम में LT लोन है वही कॉलम में लेंगे, लेकिन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सारे कॉलम में क्योंकि ओल्ड ही है, न्यू नहीं है. Now see the next fifth problem. Problem number 5. Deccan Company Limited is planning to expand its plant, which is expected to involve an investment of rupees 60 lakh. The present level of EBIT 20 lakh. The extract of present balance sheet is given. Again, existing capital, new capital, both are given. Existing capital क्या है? Equity capital of 20 lakh, 10 rupees each. तो 20 लाख रुपये, एक शेयर 10 रुपए का है, तो 20 lakh divided by 10, 2 lakh shares. कंपनी के पास 2 लाख शेयर एट प्रेजेंट है. प्रेफरेंस
10 lakh, dividend 15%, debentures 10 lakh, 10% interest, total capital employed 40 lakh. तो एग्जिस्टिंग कैपिटल 40 लाख रुपए है और कंपनी को 60 लाख रुपए न्यू कैपिटल चाहिए, तो एक्सपेंशन के बाद 1 करोड़ हो जाए. प्रेजेंट EBIT 20 lakh, we don't require present EBIT, we don't want the EBIT after expansion. ये 60 लाख रुपए लगाने के बाद EBIT कितना आएगा? तो the company is evaluating the following financing plans. Issue of equity capital for 100%, पूरे 60 लाख रुपए का इक्विटी शेयर इश्यू करेंगे. सेकेंड, इश्यू ऑफ इक्विटी कैपिटल फॉर 50%, डिबेंचर 50%, आधे आधे. 60 में से 30 लाख रुपीस डिबेंचर, 30 लाख रुपीस प्रेफरेंस इक्विटी शेयर. इश्यू ऑफ ओनली डिबेंचर 100%, थर्ड प्लान में ओनली डिबेंचर. तो ए प्लान ओनली इक्विटी, बी प्लान इक्विटी एंड डिबेंचर्स, सी प्लान ओनली डिबेंचर्स. It is projected that EBIT after expansion will be 40 lakh. ये हमको जरूरत है. एक्सपेंशन के बाद EBIT कितना होगा वो हमको चाहिए. At present EBIT कितना चल रहा हमको जरूरत नहीं है. The company is taxable at 50%. Now we have to evaluate and find out. Right? So it is fifth problem. Only equity, equity plus debenture, only debenture. Financing plans. The EBIT is given in the problem as 40 lakh, 40 लाख रुपये EBIT होगा. From EBIT deduct interest on डिबेंचर्स ओल्ड. पुराने डिबेंचर्स देखिए कितने के हैं? 10 लाख रुपीस, 10%, 10% ऑफ 10 लाख, इट कम्स टू 1 लाख. I am putting in bracket because we have to subtract. New debentures. Debentures are there in B plan as well as C plan. We don't have in A plan. Put a dash. अब B plan में देखिए debentures कितने हैं? 50% are raised through debentures. 50% का मतलब 30 लाख, 30 lakh into what is the rate of interest? 10%, 3 lakh. And in third plan we have complete 100% debentures. कितना है? टोटल अमाउंट 60 लाख है. 60 lakh into 10%, 6 lakh. We don't have any long-term loans. We have only one debt, that is debenture. So here 40 lakh minus 1 lakh, 39 lakh. 36 lakhs and 33 lakhs less. Income tax at the rate of 50%. Income tax 50%, 19 lakh 50,000. Second one is 18 lakh. Last one is 16 lakh 50,000. We got the PAT. PAT में से माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड. प्रेफरेंस डिविडेंड इज देयर इन द ओल्ड. इन न्यू प्लान वी डोंट हैव एनी प्रेफरेंस. सिर्फ ओल्ड पुराना है प्रेफरेंस. कितना है? 15% ऑफ 10 lakhs. 1,50,000 in all the columns. Subtract. What we get is profit available for
equity shareholders. How much is the profit available for equity shareholder? 18 lakh. 16 lakh 50,000. And last one is 15 lakhs. Now we need number of equity shares. We take old and new. Total. Old, existing. In the balance sheet it is given 20 lakh rupees is the equity share capital, each share 10 rupees. So 20 lakh into divide by 10 is 2 lakh shares. So existing is 2 lakh shares. And new plan. In the first plan, complete 6 lakh rupees, 60 lakh rupees is through equity. So 60 lakhs divided by 10 is equal to 6 lakh shares. B plan, we have 50% equity in a 60 lakh ka 50% 30 lakh. So 30 lakh divided by 10 is equal to 3 lakh shares. And in the third plan, it is completely debentures, no equity shares. So total will be 5 lakh here. Here 2 lakh. Now we can find out the EPS. Profit available divided by number of equity shares. So 18 lakh divided by 8 lakh, you'll get 2.25. Similarly, 16 lakh 50,000 divided by 5 lakh, 3 rupees 30 paisa. Last one, it is 7 rupees 50 paisa. Now we have to give the suggestion. So which plan we have the highest EPS? It is suggested to adopt financial plan C. Since in this case, the EPS is the highest, 7 rupee 50 paisa. So we suggest the company to go for plan C. That is, raise the entire amount of 60 lakh rupees by issuing only debentures. Only debentures. Now, next problem. Problem number 6. Mahavir Enterprises Limited is a company engaged in marketing and distribution of a large number of consumer durable products. They started with a turnover of 50 lakh in 1970 and rose to a level of 12 crore 50 lakh in 1999. The company has emerged as a leading wholesale distributor of many reputed companies. We don't require all this story. कब कंपनी बनी थी, कैसा ग्रो हो रही, अब कंपनी का पोजीशन क्या है, ये सब चीजें नहीं चाहिए. हमको ये चाहिए what are the different financial plans the company wants to evaluate. The financial position of the company is presented below. Liabilities. Equity rupees 10 is 40 lakh. तो presently 40 लाख रुपए का equity capital है, एक शेयर 10 रुपए का है, तो 40 lakh divided by 10 4 lakh rupees. Debentures 10% 10 lakh. Loan from institution, ये long term loans है 10 lakh. Current liabilities we don't require. Current asset, fixed assets we don't require. The company is proposing to expand its business operation to meet growing size of the market. The financial consultant of the company estimated the requirement to be 60 lakh. Company को और 60 लाख रुपये चाहिए. And he suggested the following options for the purpose of financing and proposed expansion. Issuance of debentures 10% interest. पूरा entirely 60 लाख रुपये raise करेगा debentures. Second, issuance of equity shares for 100%. Second plan only equity. Third plan 50% debenture, 50% equity. It is estimated that EBIT of the company will be 50 lakh rupees. Company is taxable at 40%. Which option do you suggest? So this is the 6th problem. Forensic class. First, only debentures.
Second, only equity. Third, equity plus debenture. These are the three plans. Now EBIT. How much is the EBIT given? 50 lakh. Minus interest on debt. So A. First we take interest on loan from institution. Old. The existing loan from institution 10 lakh 12%. 1,20,000 in all the columns because it is old one. All the three columns. We don't have loan from institution in the new plan. That's why new we have not taken. Now we'll come to interest on debentures. Existing, old. So old debentures are 10% of 10 lakh. It comes to 1 lakh. New. Now new debentures are there in the first plan and third plan. Second plan we don't have. The first plan only debentures. Only debentures का मतलब completely 60 lakh. 60 lakh into 10%, it comes to 6 lakh. In last plan, we have 50% equity, 50% debenture, and 30 lakh rupees are there. PBT, profit before tax. Profit before tax, it is 41 lakh 80,000. After subtracting all these amount, 50 lakh में से ये सारे brackets minus कर दिए, तो you get 41 lakh, 47 lakh 80,000. And last one, it is 44 lakh 80,000. Remember, all these deducted, ये सारी चीजों को डिडक्ट करने के बाद PBT आ गया. Less income tax at the rate of 50%, 40%. Income tax rate is given in the problem as 40%. Yes. Now 40% comes to 16 lakh 72,000. Second one is 19 lakh 12,000. And the last one is 17 lakh 92,000. After subtracting 25 lakh 8,000. Then next one is 28 68. 28 lakh 68,000. 26 lakh 88,000. Less preference dividend. I think there is no preference dividend in the existing capital. पहले की बैलेंस शीट में कोई प्रेफरेंस नहीं है और न्यू फंड्स में भी कोई प्रेफरेंस नहीं. डैश